Good morning, student. Today we will continue with the same topic of the basics of potentiometer. Okay, student. And student, to understand the potentiometer, you have to understand the potential divider circuit. Then only you can understand easily. And one more thing which you should know is nodal analysis. Okay, that also I will be revising it as I explain. Again, student, what is a potentiometer? Simply, student, it is a wire made of alloy, a long wire made of alloy fixed on a wooden board, and on this wire we connect a battery. Simply, this is actually what potentiometer is. In this wire a constant current flows. So as current flows from high to low potential, so there is a potential drop which is proportional to length of the wire. This is the basic meaning of it. Okay, student. Now suppose, student, I have a wire made of alloy. This is the wire, student, and the length is, again I am taking 1 meter. And suppose the total resistance of this wire, student, suppose it is 3R. Okay, R is some value, 3R is the resistance of this wire. And how much is the length of this wire? 1 meter, student. Okay. Now, student, this is the starting point. If I take a point 0.7 meters from here, so this total is 1 meter, this is 0.7, so this will be 0.3 meter. So how much is the resistance of this 0.7 meter length? How to find out? See, student, I am saying your method. 1 meter length, the resistance is 3R. This wire is of uniform cross section, uniform material. Okay, 1 meter length, the resistance is 3R. So how much is the resistance for 0.7 meters, student? You see, 3R into 0.7. 1 meter this much, 0.7 meter, 3R. So this will be, student, 2.1R. This means, student, for this much length, the resistance is 2.1R. Now for the remaining length, you can find out easily, student. Again, 1 meter length, resistance is 3R. So how much is the resistance of 0.3 meter length? So 3R into 0.3. You can see, student, it is 0.9R. So this much part has a resistance 0.9R. Okay, student. This is the basic theory. Okay, up to the potentiometer wire, how to find out resistance. Now, student, see. Now what I will do is, I will connect this point, I am naming it as A, this point B, this point C. Now I am connecting this wire to a battery. Again I am taking 10 volt. And I want to know the potential at point B here. How to know it? Now see, student, this circuit is equivalent to two resistance connected in series, like this. I am drawing it here. See, one resistance having, just now I have calculated, student, 2.1 R, and second resistance having the value 0.9 R. Because as I told you, the total resistance I have taken 3R. Okay, two resistance in series. Now a battery is connected of 10 volt. This is the current I. Okay, student. Now how to find out current? You know it. I is equal to V upon R. So total resistance I have taken 3R. Okay, student. Now how much is the potential difference between these 2 points? I into R. 10 by 3R into this R. 2.1R. This gets cancelled, student. So I am getting, student, V1 as 7. Student, what is V1? Potential difference between these 2 points. Okay, V1. Now how much is the potential across this? V2. Again, student, I into R. I is 10 upon 3R into 0.9R. I am, student, getting 3 volt. So here 7 volt, here 3 volt.
Now student, you come to this figure. Between these 2 points, potential difference is 7 volt. Okay. Now this battery I have taken 10. So this is 0, node analysis. This is 10, this is 10. Now potential difference is 7, means here the potential is 3 volt student. This you have to understand. See, 10 minus 3 7 means at B, how much is the potential? 3 volt. Here it is 10 volt. 3 volt is the potential here student. Now student, this can be found out by potential divider formula also. What is that formula? Now I will show you. See, this potential I want to find out V1. Now formula is student R means 2.1 R upon total resistance into total voltage applied. You solve it student, you see 2.1 R into 10. See student, 7 volt I am getting. Similarly potential divider here, this much voltage from same formula. This R I have to take 0.9 R total resistance into total voltage. See students, I am getting student 3 volt. Potential difference is 3 volt. This is how you can apply this formula without calculating the current, and this is required in potentiometer circuit student. Okay. Now student, I have to find out EMF of a battery. I have to find out EMF of a battery. How to find out? This is the potentiometer circuit student. This I am taking it 10 volt. This wire student, this wire now I am taking, to make it simplify, this length 1 meter, and I am taking total resistance R. Okay student, I am taking it. Now student, I am connecting a battery from here, unknown EMF. Here I am connecting galvanometer, and this is a jockey I am touching to this part of the wire. Okay student. Now student, suppose at this point I am getting null deflection, means no current in the galvanometer at this point. Okay. And suppose student, this length is 0.7 meter. Here the current I am getting 0. This means student, the potential which is here, the same potential will come here. Now how much is the potential here? Just now I have explained you. How much is the potential here? See, this much part, if total resistance is R, so this much resistance will be 0.7 R. Okay student? So how much is the potential difference between these 2 points? Just now I have shown you. This is 0.7 R upon total resistance. I have taken it R into 10. So I am getting 7 volt. The difference is 7 student. So by nodal analysis student, this is 10, this is 0, this is 10, this is 10. So difference is 7, means here the potential is 3 volt. Now current is 0, means this should be also at 3. Now this is 10, it's the same 10. Now student, how much is the EMF? Can you see? 10 minus 3, 7 volt. So I have calculated the EMF of the unknown cell, 7. By this method student. Can you see how the potentiometer circuit is helping us in calculating the EMF of this cell student? Okay student. Now let's take another circuit. Now student, I am taking here a battery of 20 volt. Okay, this is the same potentiometer wire, length 1 meter. Okay. Now here galvanometer, this is a wire, this is a conducting wire known as jockey. Okay. Now I have to find out the null point where the current becomes 0. That I have to find out. How to find it? See,
Node analysis, this is 10 volt, 0, this is 10, this is 10, this is 10. Now since this is 10, okay, and this is batteries of 20 volt, student, this means here the potential must be minus 10. See your difference, you see 20 will come. Now in order to make the current 0, here also the potential should be minus 10, means on this wire I should get a point where the potential is minus 10. Now if you see this wire, student, here potential is 0, here it is 10. So minus 10 will never come in between, because potential like this, 1, 2, 3 like this. Minus 10 will not come, means I will not get null point. So this is one of the very important condition of the potentiometer to find the EMF or the null point. The main battery EMF should be greater than this auxiliary battery which is connected to measure the EMF. Otherwise you will not get the null point. Because have you understood what is the theory? Here the total drop I will get voltage 0, 1, 2 up to 10. Minus 10 I will never get on this wire. So null point is not possible, student. This is one case, student. Now second case. This is the potentiometer, same potentiometer wire I am taking. Now student, I am connecting a battery like this. And this is having EMF 7 volt. Okay? And I have to find out null point. Now again, how I will do, student? See, node analysis. This is 10 volts, this is 0, this is 10, this is 10, this is also 10. Now student, the negative is connected here and the EMF is 7 volt. This means the potential here must be 17. 17 minus 10, 7. Positive is a high potential. In order to get null deflection, the galvanometer here must be at 17 volt. Means I should get a point on the wire where the potential is 17 volt. Again you see, student, in this wire potential 17 is not possible. 17 means again I will not get the null point. So this is the second condition of potentiometer, student. See, what is done is, here the battery polarity you see. The main battery positive is here. This is negative. So this is not allowed. You will not get the null point. The polarity must be same. If the positive is coming here, the positive of this should go here. Then only the null point is possible. It is not possible if you connect the battery with opposite polarity, student. Okay, student. Like this, student, you should have an in-depth analysis of the circuit. Now again I am redrawing the circuit, student, to make the concept more clear. Again I am taking the same potentiometer. This is the potentiometer circuit, student. Remember the approximation. This is a 1 meter wire. Okay. Though in general practical potentiometer is not 1 meter length, it is a much larger, 10 meter. Okay. To increase the sensitivity. This is a 10 volt battery, student. Now student, now I am taking a real battery here. So real battery will have some internal resistance, R, which is unknown. Okay, student, this is not known to us. Now student, I am getting null point somewhere, say here. And student, suppose this length is 0.6 meter. Total resistance, student, of this wire is R. यहाँ student 1 galvanometer will be there. Here I am getting null point, student, at 0.6 meter. Null point means, student, जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी होगा, तभी यहाँ करंट जीरो होना चाहिए. ठीक है, पहले नोड एनालिसिस कर लेते हैं इसका. ये 0, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10. ये अननोन ईएमएफ है, अभी हमें निकालना है स्टूडेंट. अब नल पॉइंट यहाँ आ गया. अब स्टूडेंट नल पॉइंट यहाँ पे 0.6 मीटर पे ये पॉइंट है. यहाँ पोटेंशियल कितना होगा स्टूडेंट, मैंने आपको मेथड समझाया था अभी. आप इसको एक रेजिस्टेंस मान लीजिए, यहाँ तक के यहाँ का रेजिस्टेंस होगा 0.6 R. मैंने मेथड बताया था स्टूडेंट कि टोटल लेंथ है 1 मीटर, उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R. तो 0.6 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0.6 R.
तो ये एक रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस लेते हैं ऊपर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज जो यहां से अप्लाई किया 10, तो ये आ रहा है स्टूडेंट 6। इसका मतलब स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, मतलब स्टूडेंट यहाँ पोटेंशियल 4 होगा। ये आपको समझना है, मैं फिर से कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट। ये 4 वोल्ट है, 10 माइनस 4 6। अब स्टूडेंट यदि यहाँ 4 है तो मतलब यहाँ भी 4 आना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट क्या आना चाहिए, 4। अब स्टूडेंट इस सर्किट में करंट 0 है, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे 4 आना चाहिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ 10 यहाँ 4, मतलब ये ईएमएफ कितना आ गया, 6। मतलब इस सेल का ईएमएफ 6 है स्टूडेंट। दिस इज द थ्योरी, हमने ईएमएफ निकाल लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें स्टूडेंट क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए व्हाट विल डू इज, again I am redrawing this circuit. सेम सर्किट, दिस इज सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर है स्टूडेंट। नाउ हियर आई एम कनेक्टिंग, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, ठीक है। इसका हम ईएमएफ निकाल चुके हैं 6। हियर आई एम कनेक्टिंग अनदर रेजिस्टर इन पैरेलल, इसका वैल्यू मैं ले ले रहा हूं 2 ओम, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट फिर से मैं नल पॉइंट निकाल रहा हूं, सपोज। अब सपोज स्टूडेंट नल पॉइंट यहां आ रहा है 0.4 मीटर पे, यहां नल पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट 0.4 मीटर, यहां 0.6 पे आया था। अब स्टूडेंट इस 0.4 पे ये 10 का है स्टूडेंट बैटरी, ठीक है। ये 0, ये 10, ये दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10। अब स्टूडेंट यहाँ का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, फिर से वही पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला स्टूडेंट। यहाँ का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R है, इतना रेजिस्टेंस होगा 0.4 R, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0.4 R अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। 10 4 जा 44, 4 वोल्ट का आ रहा है पोटेंशियल स्टूडेंट डिफरेंस, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल 6 होना चाहिए इस जगह पे। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 6 है, अगर यहाँ पे 6 है तो स्टूडेंट यहाँ पे भी 6 होना चाहिए। यहाँ पे 6 होना चाहिए स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अब यहाँ देखिए, अब स्टूडेंट यहाँ पे तो करंट 0 है, लेकिन इस सर्किट में करंट फ्लो होगा स्टूडेंट। इन दिस सर्किट देयर से करंट, क्यों करंट होगा, देखिए अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 6 आ गया। देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ हो रहा, मतलब इस सर्किट में करंट इज फ्लोइंग स्टूडेंट। इन दिस सर्किट देयर इज ए करंट। अब स्टूडेंट देखिए ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, हमने पहले निकाल लिया था। यहाँ 10 है, मतलब स्टूडेंट यहाँ पोटेंशियल आना चाहिए 4। देखिए 10 माइनस 4 6। अब देखिए स्टूडेंट इस रेजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ, और वही वाला करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, तो मैं ये वाला करंट ले रहा हूँ I1, इसको ले रहा हूं I2, और दोनों इक्वल होंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट I1 इज इक्वल टू I2। I1 कितना है स्टूडेंट, देखिए I1 इस रजिस्टर, देखिए 6 माइनस 4 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, 6 माइनस 4 अपॉन R। और I2 कितना होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है 10 माइनस 6 अपॉन 2। इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, ये 2 आ गया, 2 अपॉन R, यहाँ 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो R आ गया। R का वैल्यू इससे सॉल्व करने से आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट इस मेथड से स्टूडेंट हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब इसका मैं एक कंबाइंड सर्किट आपको बता दे रहा हूँ। ये तो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू स्टूडेंट एक्सप्लेन किया। यदि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर से निकालना हो तो वो जो कंबाइंड सर्किट होगा वो कैसा होगा, बहुत सिंपल स्टूडेंट, उसी को कंबाइन में करूंगा। सी ये मेन सर्किट है पोटेंशियोमीटर का, ये वायर है, दिस इज द वायर स्टूडेंट, जिसका
इसका लेंथ अपन इस एग्जांपल में 1 मीटर लिया है, ठीक है। ये वायर है, टोटल रेजिस्टेंस का R है। यहाँ से हम इस सेल को कनेक्ट करेंगे, ये देखिए ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस सेल के अंदर है, ठीक है। ये गैलोमीटर ऐसा कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट एक रेजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे ऐसे पैरेलल में, इसका वैल्यू हम S ले रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक स्विच लगा देंगे, क्योंकि याद है मैंने रेजिस्टर को बाद में ऐड किया था, पहले केस में यहाँ ये रेजिस्टेंस नहीं है स्टूडेंट, ओनली दिस पार्ट ऑफ द सर्किट वाज देयर। और एक स्विच स्टूडेंट मेन में हमेशा होता है, एक एमीटर भी लगा होता है स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट ये वाला ये है स्विच, ये है की K1, इसका नाम मैं दे रहा हूँ K2। इसको अभी ऑफ रखेंगे स्टूडेंट, पहले नल पॉइंट निकाल लेंगे, ये वाला लेंथ निकाल लेंगे स्टूडेंट, उससे आपको स्टूडेंट EMF मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट में इसको इस स्विच को ऑन करके फिर दूसरा नल पॉइंट आएगा स्टूडेंट, तब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टूडेंट मेथड बताया था स्टूडेंट। सो दिस आर द टू एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टूडेंट। One is to find out internal resistance, another is to find out the EMF of the battery. It is based on potential divider cycle. Okay student, thank you.